Hi everybody, welcome back to my channel. This session is about Palo Alto user ID. So in this session, we'll try to integrate LDAP server with our firewall, and then we can add the rule on the basis of username, or we can say like group instead of IP address. So let's understand a little bit about theory, and then we can try to set up the lab. So yesterday session we have done the captive portal, so it is also the part of user ID in Palo Alto. So user ID in Palo Alto is a feature that allow you to identify users on your network rather than just their IP address. So now we can add the rule on the basis of user instead of IP address. And whenever IP got changed, with the help of our Active Directory, or we can say like LDAP server, firewall will know the IP details like user IP got changed. Okay, so this is the beauty of user ID, we can say. There are some other use cases also, like visibility. So it's provide improved visibility into application usage based on users. Okay, giving more relevant picture of network activity. For example, we have added some rule for the HR people. So there are 10 members in HR, and we have added as a group in source towards destination, and in destination we have allowed some application, we can say. Or in short, I can tell like there are 10 member in HR, and we have given 5 application access for that 10 member. So we can keep control on that 10 users. Okay. Like, how many things they are trying to access apart from that application. So we can take some visibility. So it's provide visibility. Then policy control. So user ID is entire user information to security policy rules, ensuring that only authorized users have access to a specific applications. So whatever application we have allowed in the destinations, okay. So only we can say like authorized users, whoever called in the source as user, they can only access that application. Okay. And we can also add group based policy. So I already mentioned like if 10 member in the HR group, so we can add in source as a group directly. So source zone inside, maybe inside, and the source user we can call a group. And whatever people on that group, they are going to access the applications, whatever we have allowed for that security policy. Okay. So this is about user ID, and this is the beauty, we can say. So this is my lab topology. So we'll try to, this PC is at the moment in work group. We'll try to put this PC in the domain. And so our Active Directory is already ready. And we need to do some little bit setup here. And then we'll jump on our firewall. Okay, so let me log in firewall also. Okay, so it is logging. Meanwhile, we need to do some changes on our Active Directory. So I have already created some group, guys. So let me cancel it. I have created one sale one user, and I have created one sale group and HR group. In sale group, I have added this user, sale one. So one user is fine for testing, and we need to also create one service account. So create a service account. तो हम क्या करेंगे, सर्विस अकाउंट भी क्रिएट करेंगे. So we have already created user Palo, but we need to give some extra right for the user Palo. So हमें इसको कुछ extra right देना पड़ेगा for making we can say like for our service account. So go on the properties and member of. So by default it is the domain users we need to add, and हमें ये सारी चीजें को देना पड़ेगा. Let me first, it should be the part of distributed comms users. So just type com and check the name. Not correct. So just type dish
Just type this and check name distributed com user, that is fine. Second one should be domain users, it is already. Then event log readers. So just type event and check the name. So event log readers and then server operators. Just type server, then check the name. So server operators, that's it. Then okay, then apply and okay. If we right click again, go on the properties, member. So now Palo user is the part of all this group. You can say like member of these groups. Okay. So now next step is, so I've already set up Active Directory. So it is very simple. We just, I think I've already uploaded so many video for checkpoint related to identity awareness. So we can watch that session for the visibility. So that is the reason I did not show that step so that it will not much long. Okay. Then we need to do some extra setting apart from that. So we need to search like wmimgmt.msc. So let me search it. Let me close this. Here we can search wmi wmi dot wmimgmt dot msc. And then we need to click right click on properties, go on the security, just expand it. You need to click here, go on the security, and here our user should be show, but it is not showing at the moment. Just add, and our user was follow, check name. So now it is saying okay. And then let me just verify the step. We have added it. Then we need to enable sub option permission for authenticated users. So we need to enable like execute more method. So execute method, and second one is like enable account and provider right. Enable account and provider right. Let me enable all so that maybe it will not cause. Okay. Then apply. Then okay. Then okay. So now our Active Directory part has been done. Okay. We have enabled, we have given, we can say like rights of all the things like enable account, remote enable, rate security, edit security, that is fine. Then now we need to go on the firewall and we need to do some changing on the service route. So see, uh, our LDAP server is the part of inside zone and it is connected, this traffic, LDAP server traffic is going through the interface Ethernet 1/1. Okay, it is not in management subnet. Management subnet is 192.168.137.0/24. So for that reason, we need to change the service route. Okay. So other configuration, I have already configured. So go on the device and then on the setup and then the services, then go in the service route configuration. Then by default, management interface use, but we need to customize this. So we need to do like LDAP and what is the interface? 1/1. This one. LDAP का जो हमारा ट्रैफिक आएगा इस इंटरफेस से आएगा. इट इज नॉट इन मैनेजमेंट सबनेट, तो हमें वो उसको चेंज करना पड़ेगा. क्लिक ओके and then we need to change user ID agent, this one. Then Ethernet 1/1
that is fine. And then I will try to do Kerberos also, but I don't think it is required, but उसको भी change करके रखते हैं. Click OK. So हमने service route changes कर दिया. It is required because our LDAP server was in the part of inside zone. We can select internal. It is not a part of management. That is the reason it is why it is required. Okay. So we have done the service route changes. Then we need to configure our profile, server profile. So go on the device and then go on the server profile. Click on the LDAP. Click add, and we'll give like LDAP dash profile. And what is the name? Name we can give our LDAP server, and IP is 10.1.1.12, and it's work on the port 389. Okay. Here it is very important. In type, we need to select Active Directory, and in we need to mention like type we need to select Active Directory and base DN. Base DN क्या होता है कि जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, सो हमारा डोमेन है test.local. So we need to mention your domain name here. So base DN में for example test.local, तो DC equal to domain controller equal to test, DC equal to local. तो उसको हमें ऐसे स्प्लिट करना रहता है, एंड इज मैंडेटरी, एंड दिस इज हाउ Palo Alto डिजाइन. ओके. सो बेस डीएन में अपना जो डोमेन होता है, एक्चुअल कंपनी का डोमेन, उसको इस तरह से डिफाइन करना रहता है. इन आवर लैब केस इट इज टेस्ट और लोकल. तो हाउ वी कैन राइट दैट? DC इक्वल टू टेस्ट कॉमा DC इक्वल टू लोकल. एंड बाइंड इन, तो बाइंड इन जो हमने सर्विस अकाउंट क्रिएट किया था वो डालना रहता है. तो Palo @test.local. लेट मी वेरीफाई इट. पासवर्ड जो हमने वहां पर जब सर्विस अकाउंट बना रहा था तो हमने पासवर्ड दिया था admin @123 @123. ओके. सो जब हम यहाँ पर यूजर क्रिएट कर रहे थे गाइस, लेट मी शो अगेन. अगर यहाँ पर जाओगे एक्टिव डायरेक्टरी में, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, तो हमने एक सर्विस अकाउंट बनाया था एंड उसका नाम था Palo. सो इसको हम जब सर्विस अकाउंट बनाए थे तो इसका हमने नाम, यूजर नेम एंड पासवर्ड भी सेट किया था. तो वही पासवर्ड हमें डालना रहता है. जो भी आपका सर्विस अकाउंट रहता है उसी का पासवर्ड डालना रहता है. तो सर्विस अकाउंट के लिए हमने कौन यूजर यूज करें? Palo. इसको हमने कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दिए थे, चेंजेस किए थे. ओके. सो यही आपको देना है. जैसे HR सेल, दैट इज जस्ट फॉर दे आर जस्ट नॉर्मल यूजर एंड ग्रुप. सो HR सेल 1 दे आर नॉर्मल ग्रुप एंड यूजर. बट Palo हमने बनाया था उसको सर्विस अकाउंट के लिए एंड वी हैव गिवन सम एक्स्ट्रा राइट्स. ओके. यहाँ आते हैं. दैट इज फाइन. Palo टेस्ट और लोकल, दैट इज फाइन. एंड देन वी नीड टू क्लिक ओके. आई डोंट थिंक रिक्वायर SSL TLS सिक्योर कनेक्शन, इसका अभी नीड नहीं है. ओके. Because our LDAP server in the part of inside zone, so if you have too much gap in between your LDAP server and firewall, then we can use these types of security. At the moment it is fine. Click OK. So we have created our LDAP profile.
LDAP server profile. And then we need to create one authentication profile. So go on the authentication profile. I can also share this PDF, guys. So we can, we have already created one authentication profile for captive portal. We'll create for the LDAP. So just name the LDAP, then auth, and then authentication type should be LDAP. Okay. Server profile, we have already created LDAP profile. Just 1 minute. Okay, we have already created LDAP profile, and then we need to go on the advanced, and we'll add all users. Okay. User one is not, if you allow all, it is going to allow user one also. So all is fine. Okay, so in this time, user is going to authenticate with our AD server. Okay, profile is completed. Then we need to configure user ID parts. So go on the user ID. Then we need to configure user mapping and group mapping. So go on the user mapping. Click here. And here, guys, name is very very important. So यहाँ पर naming convention आपको properly देना होगा, otherwise it will not work. So आपको इस तरह से देना पड़ेगा. इन केस ऑफ हमारा क्या है, डोमेन कंट्रोलर में हमारा डोमेन आईपी क्या है, सॉरी हमारा डोमेन क्या है, टेस्ट और लोकल. और हमने सर्विस अकाउंट बनाया था, वो किस नाम से बनाया था, पॉलो के नाम से बनाया था. उसको हमने कुछ एक्स्ट्रा राइट दिए थे. सो वी नीड टू यूज पॉलो. तो पहले टेस्ट एंड इस तरह से. ओके, सो टेस्ट एंड इन केस ऑफ आवर पी कैपिटल पॉलो एंड password we have created like admin at 123, admin at 123. That's it. So we have created user map. So we have configured user mapping. Now we need to configure group mapping. Click add LDAP group. Server profile we have already created LDAP profile. Then user at group includes. See, अगर आपका कम्युनिकेशन इज गुड विथ योर LDAP सर्वर, तभी आपको ये दिखेंगे. इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर हमारा सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सही है, सी नाउ हमने जो भी ग्रुप क्रिएट किया था इस हमारे एक्टिव एक्टिव सर्वर पर, ओके 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 ओके. Server monitoring, we need to add server. We first will to add this one LDAP, and okay. So our address is 10.1.1.12 is already enabled.
and then guys we need to commit it. I will try to commit and then we need to do one, two, three changes. So our server status should be connected. If everything is good, it should connected. Otherwise, we need to do troubleshooting. So once it will show connected, then we need to configure user group mapping, and then we need to you know uh, select some our group whatever we created. In our case, हमने क्या create करके रखा है, like सेल ग्रुप एंड एचआर ग्रुप. तो जब भी हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल एचआर ग्रुप, सेल ग्रुप, तो जब भी हम रूल ऐड करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमने इधर ग्रुप को इंक्लूड किया है एज ए सोर्स, हम उसको यूज कर सकते हैं. तो इसका एक्चुअल मीनिंग वही है. ओके. जी, हमारे केस में क्या है कि हमने एक ही ले रखा है फॉर टेस्टिंग पर्पज के लिए. तो हम सेल नाम के हमने ग्रुप बनाया, उसमें एक यूजर डाला है सेल 1, तो उसको हम इधर इंक्लूड करेंगे एंड उसके बेसिस पर हम रूल ऐड कर देंगे. सोर्स में हम क्या ले लेंगे, सेल जो कि ग्रुप है, एंड डेस्टिनेशन में जो भी अलाउ करेंगे, एंड व्हाट एवर पीपल इन दैट ग्रुप दे आर गोइंग टू एक्सेस दैट डेस्टिनेशन फॉर व्हाट एवर एप्लीकेशन वी हैव अलाउ. हमें उसके बाद इनसाइड जोन में हमें यूजर आइडेंटिफिकेशन इनेबल करने पड़ते हैं. सो कमिट कंप्लीटेड सी. सो नाउ ये स्टेटस देखो अभी कनेक्टेड दिखा रहा, मीन्स हमारा कम्युनिकेशन विथ एलडैप इज वेरी वेरी गुड. कोई भी इशू नहीं है फ्रॉम द नेटवर्क परस्पेक्टिव. अब हम जाते हैं ग्रुप मैपिंग में, एंड नाउ लेट मी ट्राई टू क्रिएट एलडैप ग्रुप एंड सर्वर प्रोफाइल जो हमने क्रिएट करके रखा था उसे ले लिया ग्रुप. अभी देखो दिख गया. सो वाई इट वाज नॉट शोइंग, बिकॉज वी हैड नॉट कमिटेड. तो जैसे हमने कमिट किया तो हमारा सर्वर, एलडैप सर्वर और फायरवॉल के बीच में कम्युनिकेशन हो गया, यानी स्टेटस कनेक्टेड दिखाने लगा. देन हमारे फायरवॉल ने फेच कर लिया. और आप ऐसे बताओ कि हमारा जो एलडैप सर्वर है उसने हमारे फायरवॉल को, जो भी हमने ग्रुप बनाया था उसका इंफॉर्मेशन फायरवॉल को, फायरवॉल ने उससे फेच कर लिया, और उसने, आप ऐसे बोलो कि उसने शेयर कर दिया. तो हमने क्या बना कर रखा था, जैसे यूजर्स में जाते हैं, कंप्यूटर, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाया था पॉलो, पीए के नाम से. उसमें हमने देखो क्या बनाया था, एक सीन एचआर बनाया था, एचआर का ग्रुप बनाया था, एक सेल का ग्रुप बनाया था. हम इसको क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं इधर, सेल वाले को भी ऐड करते हैं. तो हमने जो भी ग्रुप बनाया था, हमने दो ग्रुप बनाया था, एक सेल एक एचआर, दोनों को हमने ऐड कर दिया, और सेल में एक यूजर हमने ऐड किया था, सेल 1. ओके, क्लिक ओके, फाइन. If you guys feel any things, we can comments and I will try to respond whenever I will free, and I will try to share this PDF to you guys so that we can follow the steps, and it is very very easy. The only things we need to be take care, and communication, like your firewall, uh, in short I can tell, like LDAP server and firewall communication should be pretty good. अगर communication नहीं है, then it will not work. We can't achieve user ID concept. Okay. सब जोन में चलते हैं, वो नेटवर्क जोन, इनसाइड I have already enable user identification, that is fine. Then commit the changes. And meanwhile, let me just
put this PC in the domain. So at the moment it is in work group. इसे डोमेन में डाल देंगे, उसके बाद में हम सेल वन यूजर से इसको लॉगिन कर लेंगे एंड कुछ भी सेल वन यूजर अपने प्रोडक्शन में, मान के चलो सेल वन यूजर मतलब एक तरह से आप हो गए कंपनी में, क्योंकि हमारा भी लैपटॉप डोमेन में ही रहता है। तो अभी ये वर्क ग्रुप में देयर इज नो एनी विजिबिलिटी फॉर दिस लैपटॉप टू आवर एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। जैसे डोमेन में डाल देंगे उसको विजिबिलिटी हो जाएगा, एंड डोमेन में डालने के बाद हम सेल वन यूजर से इस लैपटॉप में लॉगिन कर लेंगे पीसी में। एंड जब भी सेल वन यूजर कुछ भी चीज एक्सेस करेगा इन आवर प्रोडक्शन मे बी इंटरनेट से, फॉर एग्जाम्पल facebook.com, youtube.com और अनदर एप्लीकेशन or any server which is hosted on the internet or DMZ, we can see the log according to that user. Okay. और ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप उस यूजर के लिए एज ए सोर्स में उस यूजर के लिए आपने डेस्टिनेशन में क्या क्या चीज अलाउ किया है, वही चीज वो सेल वन यूजर एक्सेस कर पाएगा। एंड लॉग्स में हम उसको देख पाएंगे कि यूजर क्या कर रहा है, विच एक्टिविटी सेल वन यूजर इज डूइंग। So this is how we can keep granular control with the help of user ID. So this PC में चलते हैं, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे चेंज सेटिंग में जाओ, देन चेंज करो। यहाँ पर नाम हम यही रहने देते हैं, Windows-10 ENT, दैट इज फाइन। डोमेन में यहाँ डाल देंगे टेस्ट और लोकल। और एक चीज अपने को करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर अगर आप आओगे तो हमारा डोमेन कंट्रोलर का आईपी देना पड़ेगा, अदरवाइज cpa.cpl, यहाँ पर प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा डीएनएस में हमारा डोमेन कंट्रोल का आईपी क्या है, 10.1.1.12। तभी तो एक पीसी को पता चलेगा कि टेस्ट डॉट लोकल जो है कौन है टेस्ट डॉट लोकल। कम्युनिकेशन चाहिए ना हमारे पीसी और क्लाइंट पीसी की और सर्वर के बीच में, एलडेप सर्वर के बीच में। ओके, अब यहाँ पर चेंज करो टेस्ट डॉट लोकल। सी, अभी पासवर्ड के लिए, यूजर नेम पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट हो गया, यूजर नेम एड मिनी टेटर, एंड पासवर्ड हमने क्या रखा था, test123। देखो ये टेस्ट और लोकल डोमेन हमारा पीसी ज्वाइन हो गया। ओके, नाउ इट विल गो फॉर रिबूट, क्लोज, रीस्टार्ट नाउ। एंड जब ये रीस्टार्ट हो जाएगा देन विल ट्राई टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ यूजर सेल वन। ओके, कमिट सक्सेसफुल। अगर आप पॉलिसी में अभी आते हो तो हम उन्हें सिक्योरिटी पॉलिसी एक इसके ऊपर ऐड करते हैं पॉलिसी। फॉर एग्जांपल हम कंपनी में सेल पर्सन के लिए हम कुछ सेल सेल की टीम है हमारे कंपनी में, उनके लिए हमें कुछ एक्सेस चाहिए, मान लीजिए 5-10 एप्लीकेशन का एक्सेस चाहिए, तो उनके लिए हमें एक रूल ऐड करना, सेल टीम, सोर्स विल बी आवर इनसाइड, व्हाट इज सोर्स एड्रेस, सोर्स यूजर। देखो अभी यहाँ पर आ गया HR सेल, तो हमने सेल के लिए यहाँ सेलेक्ट कर लिया, हमें यहाँ पर आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। डेस्टिनेशन में फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन जोन आउटसाइड, डेस्टिनेशन एड्रेस यानी एप्लीकेशन मान के चलो हमने डाल दिया फॉर एग्जांपल फेसबुक। अगर आप फेसबुक अलाउ करते हो इट इज गोइंग टू इंक्लूड एवरीथिंग्स फेसबुक। इतना फेसबुक का इतने पर डिपेंडेंसी है तो अपने आप यहाँ पर ले लिया। देन फॉर एग्जांपल डीएनएस, ओके, सर्विसेज एक्शन अलाउ। So this is how guys we can add the rule on the basis of user and group if we have successfully integrated your LDAP server with your firewall, Palo Alto firewall. Okay, let me commit it.
हमारे केस में क्या रहेगा, विल ट्राई टू, देखो पहले अदर का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अदर यूजर का अभी आ गया। सो व्हाट इज माई यूजर, यूजर इज सेल वन, एंड हमने पासवर्ड क्या रखा रखा था, एडमिन एट 1 2 3। So it will take time because first time it's create for file for cell one, and second time it will not take time. Okay. So हमारा ये गोल रहेगा, like this PC should access this server, HTTP server which is hosted in the internet. उसके लिए हमें रूल डालना है। तो दिस इज HTTP सर्वर, तो हमें क्या करना है, तब तक फायरवॉल में आते हैं, लेट मी डू सम मॉडिफिकेशन। फिर हम उसका मैपिंग देखेंगे, यूजर मैपिंग। सो हमने इसी रूल को मॉडिफाई करते हैं। सोर्स इनसाइड दैट इज फाइन, डेस्टिनेशन आउटसाइड, एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, ओके ओके, इस ग्रुप को हमें, इस रूल को हमें ऊपर डालना पड़ेगा। सो जस्ट मूव ऑन टॉप। ओके, ताकि ये रूल फर्स्ट हिट हो। सोर्स इनसाइड, डेस्टिनेशन आउटसाइड, एप्लीकेशन में हम केवल एप्लीकेशन, दिस इज नॉट एप्लीकेशन, दिस इज आवर HTTP सर्वर, तो हम सर्विसेज अलाउ करेंगे केवल इसको। लेट मी डिलीट इट। सर्विस में हम यहाँ अलाउ कर देते हैं HTTP and HTTPS, that's it, action allow nothing। then let me see commits is completed or not, yeah, completed, then we can commit it, and then we'll try to access from here. See, now we have logged in through sale1 user. Okay, so we'll try to access HTTP 192.168.2.106. Yeah, sorry, 2.107. HTTP, yeah, so it is redirecting to portal, क्योंकि हमने पिछले सेशन में कैप्टिव पोर्टल भी कॉन्फ़िगर किया था। तो लेट मी जस्ट डिसेबल दिस रूल, गो ऑन द ऑथेंटिकेशन पॉलिसी। प्रोडक्शन में ऐसा नहीं रहता, बिकॉज प्रोडक्शन में हमारा डिफरेंट डिफरेंट विलेन रहते हैं, सारे नेटवर्क का सेगमेंट हुआ रहता है। दिस इज लैब इन्वायरमेंट, सो यहाँ पर इसको डिसेबल कर रहा हूँ कि किस रूल को हिट कर रहा है। कमिट इट। So if you guys like my effort, and so please share, like, and subscribe my channel as much as possible, because in future I'm going to upload so many technology things, uh, so related to Palo Alto checkpoint, load balancer, cloud automation. Okay, so 99% completed. Let me again try it. HTTP 192.168.2.107. See, now we are able to access सर्वर। सो हमारा सेल1 यूजर जो है, सेल1 यूजर ये है। Now he is able to access this server which is hosted on the internet, and this is HTTP server. Basically this is router, I have made it HTTP server. Okay, and हम उसका मैपिंग भी देख सकते हैं। We can run this command to see the mapping. So user IP dash user mapping. Let me run this command. ये हमारा फायरवॉल।
अगर एक कमांड रन करते हो, सो यूजर आईपी यूजर अल रन अगेन सी, हमारा सेल वन यूजर जो है उसका आईपी है 10.1.1.13। कल के डेट में ये इसका आईपी चेंज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाता है 16, it is going to update to firewall and firewall is going to update the IP entry accordingly. So this is the beauty of this is the beauty of user ID, guys. I will try to change also. Let me just one thing. If possible, I can do quickly on this machine. I want to show all things, guys, from beginning to end so that we can correlate. Okay. Okay. If it will work, then it's fine. Otherwise, yeah, we can't change IP. It will ask for admin credential and maybe it will take much time. So इन शॉर्ट आई कैन टेल, अगर इस पीसी का आईपी कल के डेट में 14 16 हो जाता है, मान लो इस आईपी को, इस क्लाइंट पीसी को वी कैन से लाइक सेल वन यूजर को डीएचसीपी से आईपी साइन हो रहे हैं, कल के डेट में इसका आईपी चेंज होता है और हमने उसके लिए रूल ऐड करके रखा है यहाँ पर फायरवॉल पर, एंड हमने यहाँ पर जो रूल ऐड करके रखा है दोनों पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, अगर आप देखोगे तो इसका हिट काउंट भी दिखेगा अपने को, ये देखो हिट काउंट 12 है। तो हमने यहाँ पर जो पॉलिसी ऐड करके रखा है, हमने क्या डाल के रखा है, सोर्स यूजर सेल सेल डाल कर रखा है। तो सेल जो है ग्रुप है, इसके अंदर एक सेल वन यूजर है। तो कल डेट में सेल वन यूजर का आईपी चेंज हो जाता है, स्टिल सेल वन यूजर कैन एक्सेस डेस्टिनेशन व्हाट एवर अलाउड ऑन द सर्विस http and https. Okay, we don't need to add the rule again and again for the different IP address. So this is the beauty of user ID. So I hope you guys understand this session. If you really like my efforts, please share, subscribe, like as much as possible. Thank you very much, everybody. Thank you for your time.